So in the last lecture, we completed till the color theory, right? Okay. Right, bonding in metal carbonyls. Next topic is bonding in metal carbonyls. Okay. Now, in metal carbonyls, very important feature of metal carbonyl bond is that it contains both and sigma, both pi and sigma and pi characters. So, write the first point: the metal carbonyl bond has both sigma and pi character. Sigma and pi character. Next, you will write the metal carbonyl, this metal, and this is COS carbonyl. The metal carbonyl sigma bond, the metal carbonyl sigma bond is formed by the donation of electron from lone pair of carbon, in carbonyl to the empty d orbitals. Okay. So we have metal. Metal will have some d orbitals which are empty, and we have carbonyl. Now this carbonyl is having a lone pair electron on the carbon atom. The metal is what? The metal is empty. So this carbonyl gives the electron to the empty d orbitals, and don't write this thing. So just give me a second. These two lobes overlap with each other, and then the sigma bond is formed. So we'll have metal, small antibonding here. So here we have electron density, and this electron density is between metal and carbonyl. And this is actually the metal carbonyl sigma bond. Okay. So this is what? Sigma overlap. This type of sigma overlap, head-on overlap, as you must have learned in the 11th standard, sigma overlap. So this is how the sigma overlap occurs. After this, you'll write. So this is the sigma bond. As we have seen, you have read, metal carbon has both sigma and pi character. So sigma character as so in sigma character, what is happening? You are having the electron density. It is going from the lone pair of carbonyl to the empty d orbitals. Okay, so this is very important. You have to remember this. From the carbonyl to metal. कैसा है? Carbonyl से metal. Right. Next point. The metal carbonyl pi bond is formed by pi overlap between filled d orbitals of metal and anti-bonding orbital of CO. And anti-bonding orbital of CO. So the filled metal orbitals
These are the filled metal orbitals. Similarly, if I look at the anti-bonding of carbonyl, the anti-bonding of carbonyl will be like this. Okay. Now, these two orbitals are going to overlap with each other, making the formation of what? Making the formation of giving rise of pi bonding. So what will happen? You'll have metal, and there is carbonyl, and there will be electron density here and here. This is because of what? This is because of the pi bonding. Okay, so as any, there are two orbitals overlapping, but this is only one bond. Okay, this is one bond. एक यहाँ पे नेगेटिव फेज ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव फेज ओवरलैप कर रहा है, एंड दिस इज द पाई ओवरलैप. I don't know if you remember or not, but if you had something like this ना, ऐसे इन दोनों का ओवरलैप होता था. So we used to make what? Used to have this type of overlap है ना. This was pi bonding, right? Lateral overlapping, head on नहीं हो रहा, lateral हो रहा, side-wise overlapping of orbital leads to the formation of pi bond. So this is how the pi bonding is formed. Now in this case, where is the electron going? It is going from the filled metal d orbitals to the anti-bonding of carbonyl, which is तरह से. You'll write next point. The metal to ligand bonding in metal carbonyls creates a synergic effect which strengthens the bond between metal and carbonyl. सफिया, जो नंबर मेरे पास है आपका, हाँ यस सर. वो नंबर आपका है या फिर आपके फादर का है? मेरा है. अच्छा, आपके फादर का नंबर इट एंड्स विद 1790. 1790 yes. Oh, अच्छा, तो I think Learnivio has added that number in the group. सर एक्चुअली चेक लेकिन उसमें भी नहीं था. नहीं, वो तो है. आप मतलब उन्होंने ये भी किया है. कब देखा था आपने? अभी 1 घंटे पहले सर. हाँ, नहीं, तो उन्होंने तो एक रिप्लाई भी किया हुआ ग्रुप में. अच्छा ओके सर. एक बार आप सालिम सर करके ऐसा ग्रुप का नाम है, ठीक है. So I don't know what you searched for. What did you search? I don't search for anything. I just saw कि कुछ. अच्छा, scrolled. Yes. अच्छा, ठीक है. नहीं, it is there है ना. So आप एक बार फादर का सालिम सर्च कीजिएगा ना, so you will see सालिम in the bracket there will be G 2023, G for girls 2023-24. तो एक ग्रुप है, ठीक है. You have been added. Okay. Okay sir. So what is the meaning of synergic effect? I'm just going to get that. So synergic effect, it means that synergy is a term ना. synergy का मतलब क्या होता है? Synergic effect means एक तरह की bonding इस तरह से कि metal is giving electrons to carbonyl and carbonyl is also giving electrons to metal.
So यहाँ पे दोनों की तरफ से क्या हो रहा है? There is exchange of electrons. So this is happening. This is giving rise to the synergic effect कि दोनों ही का contribution है. You understood it? When you are having contribution from both the sides, तो उसको synergy बोलते हैं ना, जो एक तरह का क्या बोलते हैं आप उसको, like vibe match कर जाना. So there is synergy in that, है ना? So that leads to more and more stability. So metal is giving electrons to carbonyl. Carbonyl is also giving electrons to the metal atom. Okay, that is the meaning of synergic effect. अगर उन्होंने सीधा ये डेफिनेशन बोला ना, व्हाट इज synergic effect, तो you will write this part only. ठीक है? The metal ligand bonding in metal carbonyls creates a synergic effect which strengthens the bond between metal and carbonyls. Got this? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Okay. Now there is a few limitations. I think we wrote the limitations of valence bond theory. Did we? I think we have done valence bond theory के limitations. हाँ, limitations of valence bond theory is done. Limitations of crystal field theory. Number 1. Crystal field theory में जैसे कि हम लोगों ने देखा था that it only takes into account the ionic character of metal and ligand bond. That means we assume a negative charge or the negative side of a dipole, and the cation that we are having, the central metal atom, it is like a cation. So सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, we are accounting only for the ionic character. ठीक है? So right, it only accounts for ionic character. It only accounts for ionic character of metal ligand bond. ठीक है? It does not take into account, excuse me, sorry. It does not take into account the partial covalent character. Third point. According to CFT, according to the crystal field theory, purely ionic ligands should have strong field. But that is not the case, or that is not the case. Right? Neutral ligands such as carbonyl, NH3 have strong field. Is everyone done till here? Yes, sir. Yes, sir.
Right, next, some important definitions. Now, obviously, there are definitions which are important, which are already in the notes, है ना? But कुछ इधर उधर के definitions जो generally मतलब छूट जाते हैं ऐसे sequence of topics में कभी कभी उसमें there is one that is known as homoleptic complexes. Homoleptic complexes. What is the meaning? Very easy definition that it is when all ligands in the complex are seen. ठीक है? Heteroleptic complexes क्या होते हैं? When different ligands are in the complex. Assalamu alaikum, Yusuf. How are you? Alaikum salam, sir. I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. How was your exam? They were okay. So, did you get time to watch the lectures that you missed? Not yet. We just today. अच्छा. Okay. So homoleptic, heteroleptic, very easy definitions, है ना? Please इन सब चीजों को छोड़िएगा मत, है ना? ध्यान से देख लीजिएगा. Because अगर एग्जाम में 1 मार्क्स का आ गया फिर बहुत अफसोस होगा. छोटी सी चीज थी, पढ़ लेना चाहिए था. So homoleptic, heteroleptic, and then we have chelate effect. Chelate effect. So what is chelate effect? Please, first of all, please write. Complexes containing bidentate or polydentate ligands bidentate or polydentate ligands are more stable. या फिर रादर ना एक पहले लिख दीजिए bidentate ligands form a ring with the metal atom. ठीक है? For example, one of the bidentate ligand is oxalate, right? Oxalate का structure कैसा होता है? Oxalate is like this: O, double bond O here, double bond O here, and this oxygen atom, it is coordinating with the metal atom like this. Now I am just changing the complete background to white right now, तो थोड़ा सा हाथ में आपको प्रेशर पड़ेगा, but देखिए यहाँ पे it is going to be easier for me to highlight things. Can you see that there is a ring type of thing? क्या सबको दिख ring है? Yes or no? ठीक है. So what happens if you have bidentate या even for that matter polydentate भी होगा तब भी वहां पे क्या बन जाएगा? You will have a ring. Now because of this particular ring, what happens? The stability of these type of complexes is even more. ठीक है? So you'll write next point. Atoms. इसमें एक और चीज लिख दीजिए साथ में. These type of ligands are called chelate ligands, है ना? Chelate ligands. Right, next. Complexes with chelate ligands, complexes with
chelate ligands are more stable compared to similar complexes without chelate ligand. Without chelate ligand. This extra stabilization due to the formation of chelate ब्रैकेट में रिंग लिख दीजिए is called chelate effect. ठीक है? I will explain you with this particular example. Let us suppose we have a metal atom here, and this metal atom it is bonded with NH3. और ये यहाँ पे भी किससे bonded है? NH3. Now, if you just focus on the carbon, sorry, if you just focus on the metal, है ना? Metal और nitrogen का bond है यहाँ पे भी in both the cases. What type of bond we have? We have metal nitrogen bond. Correct, guys? Jason, please tell me. Can all of you see that? Metal and nitrogen bond is present. Now, let us take the case of ethylene diamine or ethane 1,2-diamine. So, ethane 1,2-diamine will have NH2. Well, not NH2. It will have nitrogen like this, CH2, then nitrogen like this, and then metal bond. ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास there will be 2 hydrogens like this. There will be 2 hydrogens like this. Here also, if you see, in both the cases, the metal is bonded to nitrogen. है ना, मेटल किसी और चीज से तो बॉन्डेड नहीं है. यहाँ पे भी मेटल किससे बॉन्डेड? नाइट्रोजन से. और यहाँ पे भी मेटल किससे बॉन्डेड है? नाइट्रोजन से. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस और नो? यस सर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा. बट व्हाट विल हैपन इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड? If I break the metal and nitrogen bond, when metal is bonded to ammonia, when metal is bonded to NH3, then this ammonia, it has no further link to the metal atom. So it will move far away. आसानी से टूट जाएगा और वापस बनने की चांसेस बहुत कम होते हैं. राइट, वापस इस पर्टिकुलर बॉन्ड के बनने की चांसेस क्या होगी? बहुत कम होगी. Rather, if I am going to break these bonds, metal nitrogen bond भी हमने यहाँ पे फिर से ब्रेक किया. But what is happening here? This particular nitrogen atom, it is indirectly connected to metal, right? It is indirectly connected with metal still. That is why ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, and the probability and chances of formation of bond once again is very high. इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने पे दोबारा ये तुरंत बन भी जाता है, because the ligand cannot move far away. और अगर if you want to break, then you have to break what? Both the bonds. Then only this ligand can go far away. ठीक है, तभी bond actually में टूटेगा. And this is only happening why? Because we are forming a ring. अगर ring नहीं बन रहा होता, then we would not get this extra stability. So this ring is also known as chelate. This extra stabilization, that is a product of formation of ring, is known as chelate effect. Is this clear? Yes or no? Please tell me what is chelate effect. हाँ जी, सब क्लियर है? चीलेट इफेक्ट होता किस वजह से? अरे ये सुनो कृष्ण प्रिया. हाँ हाँ, स्टेबलाइजेशन की वजह से जब एक चेलेट रिंग फॉर्म होता है. Asal, can you please say once again? चेलेट इफेक्ट इज एसेंशियली, सिर्फ जितना मैं समझा उस चेलेट इफेक्ट में से वही है ना, जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन जो होता है, जो चेलेट रिंग की फॉर्मेशन से जो आता है. हाँ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिंग, है ना. अब क्यों हो रहा है वो भी समझ में आया ना, कि अब अगर आपके पास, if you don't have the ring, then you break the bond, the ligand is gone. But if you break the bond in the ring, then it is still indirectly connected to the metal. It can form the bond once again very quickly. ठीक है, so that is the reason. Okay. Okay, sir. Write this down if you have not written. If you have written, please raise your hand.
Is everyone done? Waiting for Krishna Priya. Yes, it's done. Done. Iram, Mir, and Sophia. Waiting for you guys. Done, sir. Yeah. Done. ठीक है. चलिए, let me just change the background. After this, you will write the topic that is remaining is isomerism. Okay, the topic that is remaining is isomerism. Okay, isomerism. Now, in isomerism, there are two types of isomerism that we have to study. तो बेसिकली आइसोमरिज्म में आइसोमर्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझ लीजिए. आइसोमर्स, व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers are compounds with same molecular formula but different chemical and physical properties. Okay. So if we have a compound, we have two compounds. Also, one more thing, isomers is like a relationship, है ना? तो आइसोमर कोई एक चीज आइसोमर नहीं हो, किसी का आइसोमर होगा, है ना? तो जैसे कोई भी आदमी ऐसे मतलब सिर्फ सलमान भाई को छोड़ दे अगर तो कोई भाई नहीं होता है, लेकिन हर किसी का मतलब इफ यू आर आस्किंग लाइक सर आर यू अ ब्रदर, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ब्रदर तो है लेकिन किसका, राइट? So whenever you have been given a compound and you are being asked, is this an isomer? The question that you should have is, हाँ isomer लेकिन किसका? ठीक है? So isomer is a relationship when two compounds which have same molecular formula but they have different physical and chemical properties. ठीक है? तो compounds ऐसे compounds जिनका molecular formula क्या हो same but chemical और physical properties अलग. ठीक है? So always it is going to be two compounds या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं but at least two compounds के बीच में relationship है. Okay, fine. These two compounds are isomers of each other. Now isomers can be divided into two main categories. Isomers एक होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक आइसोमर्स क्या होते हैं, एक आइसोमर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर and the other is stereoisomers. We have to learn both of them. ठीक है? So 1 नंबर में आएगा आपके पास पहले एक टाइप होता है which is structural isomers. And the other one is stereoisomers. Now, in the definition of isomer itself, we are having that molecular formula will be same. So obviously molecular formula तो structural isomers में भी जो structural isomers होंगे उनका molecular formula same होगा. It will be same. In the stereoisomers also, the stereoisomers will have same molecular formula, but what will differ? So the difference will be in structural isomers, the structure or networking will be different. मतलब बॉन्डिंग ही अलग हो जाएगी यहाँ पे, है ना? तो the atoms will be bonded to some different types of atoms, है ना? बॉन्डिंग यहाँ पे अलग हो जाएगी. स्टीरियोआइसोमर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा. In stereoisomers, the arrangement of atoms in space will be different. ठीक है? These are structural isomers or stereoisomers. Now, after write the heading structural isomers. Now, structural isomers are of various types. Number one, we have, first of all, we are going to learn about ionization isomer.
Secondly, we have hydrate isomer. Third, we have coordination isomer. Fourth, we have linkage isomer. Okay. In this, you'll write the number 1. Ionization isomer. So what are ionization isomers? It's very simple. देखिए isomers नाम है तो I will not write in each and every case molecular when two compounds having same molecular formula but they differ. बस नहीं लिखाएंगे हम सीधा what is the difference I am going to write. What is the difference here? They gives different ions in solution. Different ions in solution. अगर आप इसको पानी में डाल के सोल्यूशन बनाएं तो ये दोनों मतलब जो आइसोमर्स होते हैं ना आयोनाइजेशन आइसोमर्स दे गिव different types of ion different ions even though दोनों के दोनों का even though both of them are going to have the same molecular formula. जैसे कि for example please see I have a compound in which I have a cobalt atom which is bonded to NH3 we have chlorine as well as SO4. We have chlorine as well as SO4. So this is my ये coordination compound है लेकिन we don't know right now what is inside the coordination complex ion और counter ion क्या है. तो counter ion की यहाँ पे 2 different cases हो सकते हैं. Either chlorine is my counter ion or SO4 is my counter ion है ना. इनमें से कोई भी हो सकता है. Just a second. One of the complex that I can make here is if I have cobalt, NH3 Cl is inside and SO4 is outside. ठीक है. और दूसरा देखिए अभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. If I am going to write cobalt NH3 SO4 की जगह ना हम कुछ और ले लेते हैं. ठीक है. SO4 में आई थिंक आई विल हैव टू बैलेंस द चार्ज आल्सो. Br ले लेते हैं इधर भी. यहाँ पे Br और एक टाइम हम क्या करते हैं instead of Cl inside I can have Br inside and outside we are going to have Cl. ठीक है. अब समझिए जरा if I am going to add both of these to water यहाँ पे अगर हम इसको वाटर में ऐड करें then I will get an ion that is Br negative और हमको क्या मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 5Cl एंड कितना हो जाएगा इधर माइनस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड हियर यू विल हैविंग एक नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज राइट. यू आर हैविंग कोबाल्ट NH3 Br पॉजिटिव और बाहर में आपके पास क्या आ गया है Cl नेगेटिव. Now, as you can see, the molecular formula is same ना. अगर हम molecules atoms की बात करें, both of them are having the same type of atoms, right? Number of atoms are still the same. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? The ions that we are getting after the dissociation in solution is different. यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक Br negative मिल रहा है, यहाँ पे आपको Cl negative मिल रहा है. So since they are giving different types of ions, they are known as ionization isomers. ठीक है? So please write this down. Let me know if you're done. Guys, you will raise your hand once you're done. If you're on Windows, you can just use Alt plus Y to raise your hand.
Safiya, just waiting for you. Safiya, you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, understood. I Understood. wrote. So you wrote also. I can see that your hand is raised now. ठीक है, चलिए. आयनाइजेशन आइसोमर्स में ना एक आपको चीज याद रखनी पड़ेगी. एग्जाम्पल, देखिए ना, पुराना एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव CO NH3 होल 5 और आपके पास अंदर में Cl है, राइट, और बाहर में है आपके पास SO4. ठीक है, और दूसरा आपके पास बिल्कुल सेम, सब चीज सेम है, बस SO4 अब अंदर आ जाएगा और Cl बाहर आ जाएगा. ठीक है, SO4 is inside, SO4 is inside and Cl is बाहर. ठीक है गाइस, गॉट इट? इसमें Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. अब इन दोनों में आपके पास PC है, इन दोनों में ही both of these are ionization isomers, right? These are isomers. दोनों क्या isomers? अच्छा, अब इनके बीच में डिफरेंस कैसे पता चला? ये ध्यान दीजिएगा, दो टेस्ट होते हैं. ठीक है, जनरली SO4 और Cl के लिए दो टेस्ट होते हैं. अगर आपके पास कहीं पे इफ यू हैव क्लोरीन, है ना, क्लोरीन इज अ फ्री आयन, है ना, काउंटर आयन देखिए क्या है क्लोरीन. सो व्हाट कैन हैपन, दिस क्लोरीन कैन रिएक्ट विद AgNO3 एंड गिव यू व्हाइट PPT. ठीक है, व्हाइट PPT क्या होता है? बेसिकली इट इज AgCl, द फॉर्मेशन ऑफ AgCl व्हिच गिव्स यू व्हाइट PPT. इफ यू वांट टू टेस्ट whether chlorine is present or not as a counter ion, then what will happen, it is going to give you white PPT. But same चीज अगर हम AgNO3 इससे रिएक्ट करें, if I react AgNO3 here, then what will happen, no white PPT, right? Because यहाँ पे Cl बाहर है ही नहीं, no white PPT, है ना. Chlorine, it is not present in an ionic state, वो covalently bonded है cobalt. In the second case that we are having chlorine as a free ion, it is going to react with AgNO3 and give you white PPT. अच्छा, जब SO4 रहता है ना, तो SO4 के लिए हम यूज करते हैं BaCl2. BaCl2 के रिएक्ट करने पे क्या होता है, इट फॉर्म्स अगेन व्हाइट PPT. अब ये जो व्हाइट PPT फॉर्म होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ BaSO4. ठीक है, अब BaSO4 कैन ओनली बी फॉर्म इफ वी हैव SO4 एज अ फ्री आयन. अगर हमारे पास SO4 फ्री आयन नहीं है, देन BaSO4 विल नॉट बी फॉर्म. Similarly speaking, if I react this with BaCl2, obviously बात है ना, CO4 तो है नहीं यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? You will get no white PPT. You don't have SO4 there ना, that is why you are not going to get any white PPT. ठीक है, so there will be no formation of BaSO4 in the second case. और इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कैसे पता चला कि यहाँ पे सल्फेट बाहर है और यहाँ पे क्लोराइड बाहर है. तो when we reacted this with AgNO3, मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों का सेम था, बट लेकिन कभी AgNO3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट PPT दे देता था, बट समटाइम्स इट वाज नॉट गिविंग यू व्हाइट PPT. सो इन दैट केस वी एडेड व्हाट BaCl2, तब वहां पर अच्छा 4. ठीक है, SO4 नेगेटिव is acting as a counter ion in this. ठीक है, so this is how we are going to detect what are the different isomers in the case of ionization isomer especially. Write this down, let me know once you're done and raise your hand. अगला आप लोग लिख भी लीजिएगा. Just a second. We are writing. Blue में लिख रहे हैं. You write your second, that is hydrate isomers. Hydrate isomers or solvate isomers.
Please raise your hand once you're done. Sophia, just waiting for you. Just Sophia also. Write in hydrate isomers. बेसिकली आपको इसको ध्यान कैसे रखना, हाइड्रेट आइसोमर्स को वाटर इन एंड आउट, जनरली H2O इन एंड आउट, है ना, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है वो डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर H2O इन है या आउट, उस हिसाब से, ठीक है। प्लीज राइट, already write for gives different ions. Okay. Differs in the presence of solvent molecule usually water inside the coordination sphere or merely present as water of crystallization. As merely present as water of crystallization. Okay. For example, if I have a complex which is, हमारे पास एक complex जिसका formula CrH2O whole 6 and we have Cl6. Sorry, Cl6 नहीं Cl3 है हमारे पास, ठीक है। In this case, we can have क्या क्या complex बन सकता है, please. One particular complex that we can have is CrH2O, सारे के सारे water molecules अंदर और तीनों के तीनों chlorine atoms बाहर. This is one condition which can be there. Another case which can be present is when you are having Cr, 5 H2O are inside, 5 H2O are covalently bonded to the chromium atom, one chlorine is covalently bonded and two of the chlorines is outside, dot one H2O. One H2O का मतलब हुआ this is water of crystallization, है ना। You must remember what is water of crystallization from like 10th 12th standard, है ना। plaster of Paris और gypsum वगैरह के केस में आप लोगों ने सबसे पहली बार इसके बारे में पढ़ा होगा। Third case is if you are having Cr H2O whole 4, there is 2 chlorine inside and then we are having 1 chlorine outside dot 2 H2O. ठीक है। Here we are having all of these are what? All of these are solvate isomers. Solvate isomers या फिर hydrate isomers. Why? Because water in the first case it is present as a ligand. Complete all the water molecules are present as ligand. But in the subsequent cases, water is present as a water of crystallization. Water in है या out है उसकी basis पे we are going to write hydrate isomers. अच्छा पता कैसे लगेगा कि कितने water inside है कितने outside है? तो यहाँ पे basically what we have to do, we just need to add here AgNO3. आप यहाँ पे AgNO3 डालिए. So you will get 3 chlorine है यहाँ पे बाहर. So you are having 3 chloride ions. So you are going to get 3 moles of AgCl. Therefore 0 H2O outside. एक भी water molecule बाहर नहीं है. अब इस केस में if you are adding AgNO3, here we are having 2 chloride ions as counter ion. So you will be getting 2 moles of AgCl. Therefore we will say 1 H2O is out. In this case we are getting, if I react this with AgNO3, then we will be getting 1 mole of AgCl, meaning 2 water molecules are out. Okay, please write this down. All of you understood now what is hydrate isomers? Yes or no? Iram, Krishnapriya, Arslan, Veer and Satya. पानी अंदर है बाहर वो देखना है बस, ठीक है ना? Got this? It is very similar. If you see, it is very similar to the ionization isomers also. But in ionization isomers we have different ions. In this case we are having water itself, right? अरे बोलो भाई समझ में नहीं आया? Arslan, Veer, Safia and Iram. Yes, sir. ठीक है, सवाल देंगे, सवाल आना चाहिए करने, ठीक है, जल्दी करो। Sir,
हम लोग AgCl क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, AgCl नहीं, AgNO3 यूज कर रहे हैं ना। हाँ, यस, उसको भी यूज कर रहे हैं। वो यूज करें टेस्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है ना, और इसमें हमने डाला AgNO3, ठीक है, इससे हमको मिला 3AgCl, कितना, 3 मोल्स ऑफ AgCl। इसका ये मतलब हुआ that there are 3 chloride ions outside the coordination sphere, तभी तो वो आयनिक रिएक्शन कर पा रहा है ना। अगर ये क्लोरीन, मतलब 3AgCl का मतलब हुआ if I am taking 1 mole of this compound, I am getting 3 moles, उसका 3 गुना हमको क्या मिल रहा है, AgCl मिल रहा है। So that would tell me that this all the 3 chloride ions are outside। अगर 2 मिलता तो हमारे पास 2 बाहर है, तो 1 पानी बाहर होगा, ठीक है। अगर 1 मिल रहा है तो 1 क्लोरीन बाहर है और 2 पानी बाहर होगा। गॉट इट अरसलान? यस। है ना। तो ये सवाल आएगा आप लोग को इस तरह से कि हाउ विल यू टेस्ट कि कितनी यहाँ पे हाइड्रेट्स लाइक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कृष्ण प्रिया एंड मीर वेटिंग फॉर यू गाइस। Mir just waiting for you now. You will let me know if you have not written. Also, Iram, Safiya, Krishna Priya, can you please turn your cameras on? Third लिखिएगा. Coordinations. Third is coordination. That is coordination isomer. So coordination isomer again, the molecular formula is going to be same, but what will happen? The distribution of ligands, in anionic and cationic coordination spheres is different. ये सबसे पहली बात तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। It only occurs in compounds containing both cationic and anionic, complex entities, complex ions है ना। तो complex ion ना cation भी है और anion भी है। Now how do they differ? They differ in distribution of ligands, ठीक है। The distribution of ligands is different. For example, देखिए, you have cobalt NH3 whole 6, and here we are having chromium CN whole 6, ठीक है, chromium CN whole 6। अच्छा, दूसरे केस में we are having Cr NH3 whole 6 और इधर हमारे पास cobalt CN whole 6, ठीक है। तो पहले केस में if you see in the first case cobalt had NH3, अब कोबाल्ट के पास क्या आ चुका है, नाइट्राइल। chromium had chromium had nitrile या फिर cyanose, and now chromium is having amine, but overall formula इन दोनों का ही क्या होगा, we have what, we have cobalt, we have chromium, we have NH3 whole 6 and we have CN6, right? अगर हम molecule formula की बात करें, that means if I just talk about the ratios of atoms present, then both of these are going to have same molecular formula. Can all of you see this? Yes or no? Please tell me. Yes, guys. Safiya, Krishna Priya, Iram. Yes, sir. Yes, है ना, sir. ठीक है। The distribution of ligands is just different. Safiya, आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। Please write this down. Raise your hand once you're done.
Waiting for Iram. Iram is done. Safiya is done. Waiting for Mir now. Mir, let me know if you have not written. After this, we have fourth, that is linkage isomer. इरम, आपके स्कूल में कितने चैप्टर्स बाकी हैं अभी केमिस्ट्री में? They're currently on biomolecules. We have solution and DNF topic. We have solution left and DNF block. Yeah, and biomolecules. And what? Sorry? Biomolecules. अच्छा, biomolecules. Linkage isomer, ठीक है? So linkage isomer सबसे पहले it occurs only when ambidentate ligands. Ambidentate याद है आप लोगों को? Ambidentate ligands, हाँ जी, सफिया, कृष्णा प्रिया, ambidentate ligands Yes, sir. are present. What about you guys, Safiya, Iram? Yes. याद है ना? असलम, ठीक है. And how do they differ? They differ in the point of attachment. The point of attachment of ligand to central metal atom. Point of attachment of ligand to central metal atom. जैसे कि for example, अगर हम बात करें, we have NO2, right? NO2. तो यहाँ पे अगर if it is connected with nitrogen, ठीक है, तो नाइट्रो होता है. सेम चीज है ना, ONO, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, बट हियर द बॉन्डिंग इज विद ऑक्सीजन एटम. यहाँ पे नाइट्रोजन इज बॉन्डिंग विद मेटल, यहाँ पे ऑक्सीजन इज बॉन्डिंग विद. सिमिलरली अगर आपके पास CN है, तो CN में सिंपल केस क्या हो जाएगा? नाइट सियानो, इन विच कार्बन इज बॉन्डिंग टू द मेटल. बट आइसोसियानो या फिर if you have cyano N, then in that case nitrogen is bonded to, nitrogen is making a bond with the metal atom. उसी तरह से if you have SCN, जहाँ पे sulfur is making bond with the metal atom, and you can have what? SCN, in which NCS जो होता है basically, in which nitrogen is making bond. तो ये सारे अगर हो जाएंगे, तो this type of isomers is giving rise to what? Linkage isomers, है ना? आपके पास NO2 हो गया, दूसरे में ONO है, एक में CN में है और दूसरे में NC होगा बेसिकली, है ना? NC. अच्छा, इसको एक सेकंड रुक जाइए जरा, आप लोग ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको. एक सेकंड, इनको ना ऐसे लिखिए आप, ONO, NC और NCS, ठीक है, इस तरह से लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा. अदरवाइज CNCN आपको सेम बनने लगेगा. After this, you are going to write a question and then you will send the answers on my WhatsApp. Name the type of isomerism exhibited by the following isomers. I think this question is 4 सवाल आएंगे, शायद बोर्ड्स का सवाल है, but we will look at some of the questions from boards also.
Sir, Mhm. can I like send you the answers here on text? Because I don't have the phone. On the Zoom chat. Yeah. Yeah, Zoom. You can send me on the Zoom chat. No problem. Takes 2 more minutes and then you will send the answers on my WhatsApp, or if you can number it 1, 2, 3, 4 तो आप Zoom chat में भेज सकते हैं. सफिया यार आपसे ये उम्मीद नहीं थी. I was not expecting this from you. आपने फोर्थ वाले में थोड़ा लेजीनेस कर दिया है ना. देखिए जरा, फोर्थ वाले में आपने सोचा कि सारे तो हो गए, बस एक बचा हुआ उसका नाम लिख देते हैं. राइट सफिया? हाँ सफिया बताएं. वही किया ना आपने? सॉरी व्हाट सफिया? नहीं सर, ट्राई अगेन. कहाँ कुछ नहीं ट्राई किया आपने. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट, थर्ड वन भी करेक्ट. आपको लगा बस एक तो बचा हुआ है, फिर लिख दिया आपने. आई होप यू गेट ना दैट इट्स नॉट राइट. करेक्ट फोर्थ वन. फोर्थ वाला अभी भी आपको सही लग रहा है क्या सफिया? कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes sir, not is not. इट्स नॉट ना. आप ये बताओ, आपने सच में वैसे ही कहा था ना, एक बचा हुआ उसी को लिख देते हैं. Uh, नहीं. चलिए ठीक है. सेंड मी द करेक्ट आंसर. ओके सफिया. yes sir.
चलिए ठीक है, मेक सेंस, नो प्रॉब्लम। Iram, I'm looking at your answer, okay? Arslan and Krishna Priya, what happened? I have not got your answer. Hold on a second, sir. I did send it. Let me check if I sent it to you or not. Oh, No, I I'm sent not. to Learnivio. Okay. Yeah, sorry for me. Arslan, can you please send me whatever you have done? Yes, sir. I can't find it so far. Did you get it, sir? Yes. I got it, Krishna Priya. First is fine, second is fine, third is, yeah, very good. Everything is correct. Arslan, send it once you're done. Third one you have written coordination. Yes, sir. हाँ सफी, आप सही है आपका, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पहला वाला केस आपको समझ में आ रहा होगा, that exchange of ligand is happening, so it is going to be coordination isomer. In the second case also it's very visible that we have ONO or NO2, बाकी सारी चीजें सेम है, that is why it is going to be linkage isomer, right? Linkage isomer. यहाँ पे अगर देखें आप, there is exchange of ions, ठीक है। लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग, देखिए थर्ड वाले में कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर आपको याद हो अरसलान, वो तभी होगा when you are having, when the compounds containing both cationic and anionic complexes. cationic इस तरह के अगर मॉलिक्यूल्स में ना कि कटायन भी आपका कॉम्प्लेक्स है और अनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तभी उन्हीं केसेस में you will be having the coordination sphere. Got it अरसलान? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, you will see that there is a exchange of ions. SO4 एक टाइम में अंदर, इधर बाहर, यहाँ पे Br अंदर और यहाँ पे Br is बाहर, right? So this is a case of ionization isomer, ठीक है। And obviously this the fourth one here, यहाँ पे आपके exchange of ligands is happening. Yes or no, please tell me guys. सही है, बताइए। Yes. ऐसी ना, so this is what linkage. Whenever you are having two different complex ions ना, cationic and anionic हो रहे हैं, दोनों ही के दोनों क्या है, complex ions है, then it is going to be what? It is going to be coordination isomer, ठीक है, coordination isomer, ठीक है। चलिए you can correct this down. और दूसरी चीज इरम देखिए, if इरम एक बात बताइए, these complexes are different, right? कोबाल्ट में अमोनिया लगा हुआ है और यहाँ क्रोमियम में अमोनिया लगा हुआ, राइट? yes or no, इरम? Yes, sir. Yeah. इसके आयंस, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये तो मतलब डिफरेंट आयंस देंगे ही, है ना। बट एक स्पेसिफिक टाइप का आयनाइजेशन आइसोमर्स होता है व्हेन वी हैव बोथ
cationic and anionic parts of a compound as complexes, तो उन cases में भी say that it is coordination isomer. ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमर्स तो इवन फॉर दैट मैटर लिंकेज आइसोमर में भी अगर देखें ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसमें इसका नाम ही अलग है, राइट, और इस वाले का भी नाम अलग है। इरम यू आर सेइंग समथिंग, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। No, sir. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स ना एसेंशियली सभी में होगा। ठीक है, अगर आप देखें इवन फॉर दैट मैटर हाइड्रेट आइसोमर्स को भी अगर आप देखिए, वेयर इज हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है, इन हाइड्रेट आइसोमर्स या यहाँ पे आपको मिलेगा 3 क्लोरीन, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 क्लोरीन, ऑब्वियसली वी आर गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, राइट, ये सुनो सही है ना। तो Yes, sir. आयनाइजेशन आइसोमर्स अगर आप देखें ध्यान से, आयनाइजेशन आइसोमर्स सारे नीचे के सारे केसेस है, बट उसमें एक स्पेसिफिसिटी आ जा रही है that now the ionization isomers is happening because of in and out of water molecule. Coordination sphere में the ionization isomerism is happening because of the exchange of ligands, and in linkage isomer it is because of the different point of attachment of ligand to CMN. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब कुछ सवाल है जो कि इस साल आपके बोर्ड्स में आए थे आइसोमर्स से, तो हम एक एक करके आपको यहाँ पे डाल दूं। Tell me guys ABCD in the chat please. We have seen a very similar question right now. ABCD, देखिए ये ऑप्शन हमने डाल दिया क्योंकि वी हैव लर्न लिंकेज आइसोमर पता है हमको क्या होता है, आयनाइजेशन पता है हमको क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पता है हमको क्या होता है ना। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं होता तो आप सी ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। दैट इज व्हाई इवन दो वी हैव नॉट लर्न ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट अगर आपको लग रहा है कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आप कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, देन यू कैन गिव द सी ऑप्शन। कृष्ण प्रिया, ओके, या वेरी गुड कृष्ण प्रिया। व्हाट अबाउट अदर्स यार, इफ यू हैव सेंट द आंसर प्लीज चेक दैट यू आर sending it to Salim and not to Learnivio. If you have sent the answer in the Zoom chat, एक बार confirm कर ले that you have sent it to Salim and not to Learnivio. Yes, Iram, correct, very good. Yes, Mir, अरे वाह, very good, Mir, समझ में आ रहा। चलिए, आपकी पहली क्लास है फिर भी आपको समझ में आ रही चीजें, है ना मीर? जी सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आ जाएगा। हाँ। ये असल में चैप्टर जी हमने आपको अभी बुला लिया क्योंकि आइसोमेरिज्म ऐसी चीज है ना जो थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगाएं तो समझ सकते हैं। गाइस, जी। अरसलान एंड सफिया, हाँ ABCD लिखे यार। सफिया को बड़ी मेहनत करने की आदत है लगता है सफिया? ABCD लिख दे बस, है ना। अरसलान भाई क्या है, अरसलान क्या हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ऐसे गलती से ही गलती से चला गया, अच्छा आप ठीक है, ओके ओके, हम बोला तुम लिंकेज आइसोमर डाल रहे हो यहाँ पे, आई थॉट दैट आपको लगा ये NO2 वगैरह ना क्या। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, ऑल ऑफ यू डन इट करेक्टली, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो ऐसे तो क्या बोलते हैं इन द चैट प्लीज, एग्जांपल छोड़ दीजिए आप, मतलब अच्छा गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो वो आप दे भी सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा सवाल दिखाएंगे ना जिससे आपको लगेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म भी। सवाल तो आते ही आते हैं लेकिन वो लिंक करके भी सवाल, अरे बताओ भाई, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हेन एम्बिडेंटेट लिगेंड। या वेरी गुड एरम, वेरी गुड। आप इस चीज के बारे में तो बिल्कुल ना एकदम निश्चिंत रहिए, सवाल का जो लेवल रहता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल आपके नोट्स जैसा रहेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट नोट से सवाल ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, सो यू शुड नॉट वरी बिल्कुल। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ सवाल ऐसे रहते हैं बिल्कुल बोर्ड्स में जो आपको एकदम नहीं आएगा, मतलब मेरे नोट्स में वो नहीं मिलेंगे। एक दो सवाल ऐसे रहते हैं, जैसे इस बार एक आया था सवाल, व्हाट इज मिस्ट मेटल, MISCHMETAL, राइट। तो मिस्ट मेटल एक किस्म का एलॉय होता है, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी लाइन, दिस वाज फ्रॉम द D and F ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो जो रटने वाले चैप्टर्स जिसके किसी भी लाइन से सवाल बना दिया जा सकता है, वो सब सवाल आपको शायद नोट्स में डिटेल में ना मिले, बट 95% of the questions that will come in your board examination will be from the notes itself. ठीक है, अच्छा ये this is very important question। ये important क्यों हो जाता है, देखिए, they are asking write the IUPAC name of the ionization isomer of CONH3 अब यहाँ पे ना थोड़ी difficulty आती है इस केस में। आप देखिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, you should know how to name a complex। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, है ना।
If you don't know how to name the compound, then it will be very difficult. आपको आएगा ये सवाल. फिर आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन आइसोमर होता क्या है by definition. Then after that you should also know that अगर आपको कोई कंपाउंड दिया तो उसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाया कैसे जाएगा. Is that clear? Yes or no? Please tell me. ठीक है. So what you have to see, you have to see what is the charged species here. If you look at cobalt, NH3, SO4 and Cl, in this you have to identify the ligand which is having charge. NH3 पे तो 0 होता है, सल्फेट पे -2 होता है and chlorine is having what? -2. ठीक है. लिगेंड यहाँ पे सल्फेट है, तो सल्फेट जिसपे चार्ज है ना उसको आप बाहर कर दीजिए, Cl को अंदर कर दीजिए, तो then you are going to get cobalt. NH3 को वहीं रहने देना है आपने, कुछ नहीं करना है. SO4 का चार्ज था उसको बाहर ले जाइए और जो बाहर था उसको अंदर ले आइए, तो Cl अंदर आ गया और SO4 बाहर. ठीक है. And now you have to name this compound. All of you got this? Yes or no? Please tell me. What is the demand of question? Did you understand this? Yes or no? बोलो भाई. Yes, sir. Yes. चलिए ये बताइए. What about these? सेम सवाल है क्या? Almost. A, B, C, D. Answer please. एट नंबर में बताएं. ए बी सी डी. हिरम करेक्ट, वेरी गुड. सिर्फ हिरम का आंसर आया. ए बी सी डी. जल्दी आंसर करें, बहुत टाइम लग रहा है. सफिया आप सिर्फ ABCD लिखिएगा. वेरी गुड सफिया, वेरी गुड. मीर करेक्ट. अरसलान एंड कृष्ण प्रिया वेटिंग फॉर यू गाइस. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? अच्छा, हाउ टू राइट द आयनाइजेशन आइसोमर. अच्छा सी कृष्ण प्रिया सही है. So here you need to आपको एक्सचेंज करना ना, एक आयन अंदर जाएगा दूसरा बाहर जाएगा. करेक्ट सफिया? यस सर. तो लिगेंड आपको देखना की फिर माइका लिगेंड देखना. तो NH3 तो 0 है, इट इज हैविंग 0 चार्ज. दैट मींस NH3 इज नॉट अ आयनिक लिगेंड, राइट? सो व्हाट इज द आयनिक लिगेंड हियर? इट इज SO4. सो आप SO4 को बाहर भेज दीजिए, क्लोरीन को अंदर ले आइए. सो यू विल गेट द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड. गॉट इट? ओके सर, थैंक यू. ठीक है. नेक्स्ट इज, हाँ ये भी सही है सबका, दैट इट इज आयनाइजेशन आइसोमर. हियर यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स दिस इज रेड इन कलर. वो तो ठीक है भाई. गिव IUPAC नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर, ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर. इसका लिंकेज आइसोमर कैसे बनाएंगे? यू कैन आइडेंटिफाई दैट NO2 इज अ एम्बिडेंटेट लिगेंड, विल हैव कोबाल्ट, NH3 whole 5, ONO, and then in bracket the Cl2 will be still there. Same thing. ठीक है. बस NO2 को क्या कर देना है? ONO, है ना? और ONO के बाद फिर इसका नाम कैसे हो जाएगा? एवरीथिंग विल बी सेम इन द लिगेंड. इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो N आ जाएगा, राइट? एवरी अदर थिंग इज गोइंग टू बी नाइट्रीटो O, राइट? नाइट्रीटो O विल बी द लिगेंड्स नेम. बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सेम रहेंगी. तो यहाँ पे व्हाटएवर द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज हियर. यहाँ पे भी आपको ये चीज पता होना चाहिए. यू हैव टू राइट हाउ टू राइट द लिंकेज आइसोमर का फॉर्मूला और उसका IUPAC नेम भी आपको आना चाहिए. Is that clear? Yes or no? Please tell me guys. सबको समझ में आ गया कैसे करना है? Let me see अगर और कोई सवाल बचा है या नहीं. और कोई सवाल नहीं है? ठीक है. So that's it for today. We have not completed isomers still. We have completed structural isomers. Structural isomers हमने कर लिया. In the next class, we will look at stereoisomers, and that will be the last class of coordination compounds.